bedtime story with you all and talk with you all because results का डर अभी सबके सर पे है और मुझे रोज़ सुनने को मिल रहा है आज रिज़ल्ट आ रहा है, आज रिज़ल्ट आ रहा है. तो it is kind of bringing back the memories that we had been through, and I can understand the amount of anxiety that this causes. So I thought I'll just share my own story, and this has no purpose at all apart from just sharing my own story and maybe to motivate someone who wants to listen to it. But other than that, I think there's no substantial knowledge transfer here. So let's begin. कहानी स्टार्ट होती है 23 सितंबर की रात से, जब हमें पता लगता है कि कल रिज़ल्ट आने के 99.9% चांसेस हैं. और ये पता लगता है टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू. जो आई वॉज अ पार्ट ऑफ वन टेलीग्राम ग्रुप जो कि इंटरव्यू ग्रुप था, एंड इट हैड ऑल दी स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन. उसमें कोई कह रहा था अभी रिज़ल्ट आएगा, कोई कह रहा था कल सुबह आएगा, कोई कह रहा था कल शाम को आएगा. बट समहाउ इट वॉज प्रिटी क्लियर कि रिज़ल्ट नेक्स्ट डे आने वाला है. तो रात को आई थॉट कि ओके, मुझे अभी तक कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, सब अच्छा होगा, एवरीथिंग वुड बी गुड. सो आई क्लोज माई लाइट्स एंड आई ट्राई टू स्लीप इन माई रूम. और जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी, आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू स्लीप. मैं बार बार टेलीग्राम ग्रुप खोल के देख रही थी और बार बार आई वॉज ट्राइंग टू इमेजिन इन माई हेड कि जब रिज़ल्ट आएगा तो मुझे PDF ऐसा दिखेगा और मैं अपना नाम ऐसे टाइप कर रही हूँ और सर्च कर रही हूँ और मेरा टॉप रैंक्स में नाम आ रहा है, ऐसा मैं विजुअलाइज कर रही थी. काइंड ऑफ ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ अ लिटिल काम कि होएगा होएगा. एंड बट इट वॉज नॉट हेल्पिंग. एंड सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड with whom I had discussed a few questions for the personality test, and he was the only person whom I knew in this UPSC web who was a source of the results. And I got very scared, and then I picked up the phone and result nahi aaya tha. He just said that okay, here's a pact that if the result is coming tomorrow, the pact is that we are not going to message or call each other at all. And I happily agreed to that pact because of course आप जब एक ही इंसान को जानते हो UPSC में, तो अगर कोई भी मैसेज या कॉल आता है तो लगता है रिजल्ट के लिए ही होगा. तो टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम दैट एंजाइटी वी थॉट ओके फाइन, वी वोंट टेक्स्ट और कॉल. एंड आफ्टर आई केप्ट द फोन, दैट इज़ व्हेन माई एंजाइटी बिगैन. उसके बाद मुझे ऐसे फील होने लग गया कि why am I not being able to sleep? And I opened the Telegram group और वहाँ मैंने देखा कि कोई नहीं सो रहा था. Like I think out of 1,000 people, 700 were online, and that was crazy because it is so surreal that so many people are going through the exact same emotions at the same time. And वहाँ पे ग्रुप में सब लोग बातें कर रहे थे. मैं ज़्यादा मैसेज नहीं करती थी उस ग्रुप पे, बट आई वुड रीड अ लॉट ऑफ मैसेजेस बीइंग द साइलेंट ऑब्जर्वर. सो आई वाज लुकिंग एट द मैसेजेस कि सब लोग कह रहे थे नींद नहीं आ रही है. In fact, a few people also started a group call, and a lot of people joined in that group call, which was really amazing because nobody knew each other. So all that was going on. And then I don't know when I slept, but I remember that I woke up very early in the morning. And I'm usually not a morning person, so waking up early is something different for me. So I woke up early, and as a ritual I took a bath and I went downstairs to a temple. तो मंदिर मेरे घर के पास में ही है. तो मैं मंदिर गई and पूरे टाइम रास्ते में, and I was repeating this process again and again in my head that I'm typing my name and result आ रहा है. एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि लैपटॉप पे खोलूँगी या फ़ोन पे खोलूँगी, मम्मी पापा को बैठा के खोलूँगी या पहले खुद से चेक कर लूँगी फिर बताऊँगी. सो ये सारे बहुत छोटे छोटे निटी ग्रिटीज़ के डाउट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में. देन आई वेंट टू द टेम्पल, आई प्रेड, I just reran the entire process in my head in the temple also, and then I came back. And when I came back, I saw my mother.
और मेरी मम्मी एकदम रेडी थी. शी वॉज वेरी नीटली ड्रेस्ड एंड शी वॉज मतलब cleaning the house. She was trying to put everything in its place. And then I asked कि अरे क्यों ऐसा कर रहे हो? I know you're doing it for the results. तो मम्मी ने कहा अरे नहीं रिजल्ट की वजह से नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ. But I knew it was for the result only because my mother was so excited about the result. And whenever I would ask her कि होएगा या नहीं होएगा, she would say कि अरे बिल्कुल होएगा, बिल्कुल बस तुम रेडी हो जाओ. And I would just it used to be so crazy because I would tell her कि मम्मा कुछ नहीं होगा, आप बैठो आराम से, आप रिलैक्स करो, कुछ नहीं होने वाला है. बट माई मदर वॉज वेरी पॉजिटिव. शी वॉज लाइक हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, बस रेडी होके आ जाओ. सो आई डिड नॉट लिसन टू हर. आई वॉज स्टिल इन माई नाइट सूट. एंड सो धीरे धीरे उसके बाद आफ्टरनून बीती. And I was trying to read for the prelims at that time because prelims was just 1 week ahead. और मैं history पढ़ रही थी Spectrum and I was also simultaneously trying to do answer writing for history. But that day मैंने बहुत कोशिश की. पहले मैंने history पढ़ने की कोशिश की, नहीं हो पाया. फिर मैंने PT 365 उठाई, current affairs पढ़ने की कोशिश की, तो भी नहीं हो पाया. तो फिर फाइनली आई थॉट व्हाट शुड आई डू. एंड आई हैड एन आईपैड एंड नया नया ही आया था वो. और मैंने सोचा कि चलो इस पे मैं स्केचिंग करूँगी, ड्राइंग करूँगी. एंड आई पेंटेड ऑन दैट आईपैड फॉर ऑलमोस्ट 1 hour स्ट्रेट. एंड उसमें भी मेरा मन नहीं लग रहा था, बट स्टिल आई वॉज पुटिंग ऑल द कलर्स एंड आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ ट्री एंड अ प्लांट एंड एवरीथिंग पॉसिबल. एंड after 1 hour it was already evening and that was it. I thought now I cannot like keep myself distracted anymore. So तब तक क्या होता है कि I was done painting and I hear my dad calling my name, Apala Apala. And I came out of the room. I said what happened? So he just wanted to tell me that he wanted to ask me whether he should go to the gym or not. तो पापा ने पूछा कि जिम जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि आधा 1 घंटा लग जाएगा और उतने में रिज़ल्ट आ गया तो फिर ही शुड बी एट होम. तो आई वॉज लाइक अरे पापा आप प्लीज़ जाइए और बिल्कुल डोंट curtail your daily activities because of the result. And पक्का भी नहीं है, श्योर भी नहीं है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा. एंड 2000 years later. फाइनली मैंने अपने पापा को कन्विंस किया कि नहीं आप जाइए, आप जब तक आएंगे तब तक नहीं आएगा रिजल्ट, अभी तुरंत नहीं आने वाला है. एंड माई फादर गॉट कन्विंस्ड एंड ही वेंट टू द जिम. एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई ओपन टेलीग्राम एंड आई सॉ दैट देयर वाज अ मैसेज ऑन टेलीग्राम. एंड दैट मैसेज वॉज that the notice board of UPSC was being cleaned. There was a photo and उसमें पहले NDA का रिजल्ट था and अब उस रिजल्ट को हटा के they were cleaning the board so that they could put UPSC result over it. And a lot of people were actually waiting over there to see the result, so which was also pretty unbelievable, but it was quite great also. So I saw that photo of the notice board and I thought this is it. Now I'm not going to check my phone. So I switched off my phone and I kept it in my room and I came in the drawing room and sat in the drawing room with my mother. And so by that time my father had also entered. He was back from the gym and he just came and sat down like from after workout in the drawing room. And I saw the time. It was 6 p.m. and I thought I'll wait till 6:30 maybe. And I was just walking and talking to my mom. And I thought okay maybe 6:30 तक वेट करते हैं. अगर हुआ होगा रिजल्ट क्लियर तो वो पता लग जाएगा, और नहीं हुआ होगा तो भी पता चल जाएगा कि कुछ नहीं हुआ. So I was just looking, trying not to look at the time, looking around, whiling away my time, talking to my mother, sitting on this sofa. And suddenly the bell rang and it was 6:15 and this is when I knew it. I was like mama रिजल्ट आ गया है लगता है, आप दरवाज़ा देखो.
and I thought I am in no capacity to check who is there on the door. So I went to my bedroom from the drawing room and I picked up my phone and I was like trying to switch it on. और जैसे ही मेरा फ़ोन स्विच ऑन हुआ वैसे ही मुझे दरवाजे से आवाज़ आई. वन ऑफ माई नेबर्स वॉज देयर एंड ही सेड, अरे आंटी अपाला का 9th रैंक आया है. And that is the exact same time when my phone opened and I saw a series of messages which were saying congratulations on 9th rank, congratulations, and they were like 10 WhatsApp messages, and both the things happened so simultaneously, and I was standing right there outside my room still in my night suit because I did not change when my mother asked me to, and I did not know how to react, and I was just silent. And my mother was very happy and she was saying, I told you hoega, and my father was also very happy. But then my father said, why didn't you get to know it earlier? So my father is an army father and he's a very disciplined person. तो उनका एक मेजर डाउट ये था कि बाहर से कैसे पता लगा, खुद क्यों नहीं पता लगा. एंड बहुत मुश्किल हुआ उनको एक्सप्लेन करना कि मैंने जानबूझ के फ़ोन ऑफ करके रख दिया था सो दैट आई डोंट गेट टू सी इट. बट इट वॉज वेरी टफ फॉर हिम टू बिलीव दैट ऐसे भी कर सकते हैं. सो देन like my parents were very happy and I did not know how to react, especially because there were so many people and I am a little introvert. I just felt conscious. That is how I can explain it. And then within 10 minutes there were people who were at the door and there was media, and that night I think that was the longest night of my life because I did not sleep that night too, because there was something or the other going on till very late at night, till 2 a.m. and there were calls from relatives and everything, and I was saying thank you. And then at night it suddenly kind of struck me that okay, I'll be able to get Indian Foreign Service, and that was a huge deal for me because you know for the first few moments after the result बस यही लग रहा था कि एक नंबर दिख रहा था, 9th रैंक आ गई, बट ये नहीं दिख रहा था कि what you'll get. एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडियन फॉरेन सर्विस मिलेगी तो मुझे फाइनली जाके दिल को थोड़ा सुकून मिला. हाउएवर आई से कि बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था. उसके बाद का एक महीना यू डोंट नो वेयर इट गोज़ एंड यू नो थिंग्स, it is very overwhelming, but I think you know how your life can change within a second, and within a minute you can become very important to some people, and एक मिनट पहले आप उतने important नहीं थे. But then I also think that having been through 2 failures, I think this success was very important, and I felt very grateful because I had been there on both the sides. And you know, to know how it feels is a different experience altogether. So I just say that 1 year down the lane, I'd say that my life has changed definitely, and things are different, yes, definitely. But would things have been different had I not cleared? Maybe. And would I be this happy? I think definitely. Because you know, 1 year down the line you realize that it is just an exam, and this is a very prestigious job, but at the end of the day a job in which again you will have to work very hard. So wherever you go in life you have to do hard work, and whatever path you choose, every path can give you happiness and every path requires hard work. So